So good morning to all of you and welcome back again in the online lectures of our Allelic Science College Simon. We are discussing here the part of unit semester 4, paper 2, having the name Genetics and Molecular Biology. We are discussing about the unit 1, which is totally related with the genetic basis of inheritance, that how the genetic characteristics are transferred from one generation to another generation. In the previous lecture, we have completed the part of Mendelism, and in this Mendelism, we have discussed the different points which are related to the laws of inheritance, basically the law of segregation and law of independent assortment. According to the law of segregation, whenever the cross between the two pure parents, then the characters they get combined, they does not mix or contaminate each other. And at the time of gamete formation, the characters they get segregate or separate. It is called as law of segregation. Here the purity of gamete is maintained, means the gametes does not contaminate. That's why law of segregation is also called as law of purity of gametes. In the next law, that is the second law, law of independent assortment, whenever the two homozygous parents get crossed, then it produces the F1 generation, and both the parents they are express their character independently in the F1 generation. Means both the characters they are independent whenever they express their character. So in this way we have discussed the points in the previous lecture. ठीक है, इसके पहले के lecture में हम लोगों ने discuss किए हैं different points. Now today we are going to deal with the interaction of genes, that is gene interaction. It consists of the allelic gene interaction, that is having the example incomplete dominance, having the ratio 1:2:1. Example is Mirabilis jalapa. And non-allelic gene interaction, having the examples complementary genes and dominant epistasis. Complementary genes having the ratio 9:7, and dominant epistasis having the ratio 12:3:1. So let's just talk about this gene interaction after the Mendelism. So Mendel was very methodological person, and he performed the experiment with the stepwise procedure, and he collect the data, and on the basis of data he gives information that how the characteristics are transferred from one generation to another generation. So after giving Mendelism, or after explaining the hybridization experiment, Mendel gives information related to the interaction of genes. जीन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके बारे में मेंडल ने इंफॉर्मेशन वहां पे दी है. So let's just talk about that how this Mendel gives information related to this interaction of genes. First of all, we should know that what is meant by the gene. That gene, it is the particular segment of DNA. DNA का particular segment जो होता है उसे हम लोग कहते हैं gene. Since the rediscovery and confirmation of Mendel's principles of heredity by the three geneticists, namely the Hugo de Rice, Correns and Shermack. ठीक है, मतलब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो रिडिस्कवर किया था तीन साइंटिस्ट ने. उनके नाम थे ह्यूगो डी राइस, यहाँ पे ह्यूगो नहीं लिखा है, उनका नाम था ह्यूगो डी राइस, कोरेंस एंड शर्मैक. Got momentum in the genetic research. मतलब मेंडल के बाद इन तीन साइंटिस्ट ने जेनेटिक रिसर्च किया था, और उन्होंने भी ये पता करने की कोशिश की थी कि दैट हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one generation to another generation. Many important genetic phenomena on the interaction and principles have been discovered during the post-Mendelian genetics era. ठीक है, इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक फिनोमेना और इंटरेक्शन डिस्कवर हुए आफ्टर द पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ. मतलब मेंडल का जो लॉ था या फिर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, वो परफॉर्म करने के बाद मतलब पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसे हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स कहेंगे. मेंडल के एक्सपेरिमेंट के पहले की अगर कंडीशन कहेंगे दैट इज अ प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, तो ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स थी. मतलब पोस्ट आफ्टर द पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स मेनी concepts and many discoveries are carried out related to the genetics.
Many were following the Mendelian principles and advocates that one gene or a factor control one character of the two alleles of a gene, where the one allele is completely dominated over the other allele. तो इसके बाद में मेंडल को एडवोकेट करके, मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आगे रख के, प्रिंसिपल्स को आगे रख के, कंसिडर करके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम generation after generation. However, many other could not confirm the Mendelian principles in their experimental results, since they have shows the deviation from the Mendelian principles. Among them were William Bateson and his associate R.C. Punnett. Means they gives information that however many experiments are performed after the Mendel's principles or on the basis of Mendel's principles. आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल का लॉ जब रीडिस्कवर हुआ तो मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे परफॉर्म किया गया. So this Mendelian principles in their experimental results, since they have shown the deviation, means after performing the Mendel's experiment on the another plant means other than pea plant. Mendel performed experiment on the pea plant, but other than pea plant, the many scientists they perform the experiment, Mendel's experiment on the different plants and animals, right? So whenever they perform the experiment on different conditions of the different organisms, they found some deviated results, slightly different result as compared to the Mendel's experiment. मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके कंपैरिजन में उन्हें फिर थोड़े अलग अलग रिजल्ट मिलना शुरू हो गए एंड दे नेम्ड इट एज अ डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन प्रिंसिपल. ठीक है, इस कंडीशन को फिर नाम दे दिया गया डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन प्रिंसिपल्स अमंग देम. उनमें से जो साइंटिस्ट थे कि जो डेविएशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे या फिर रिसर्च कर रहे थे, फॉर एग्जांपल विलियम बटेसन एंड हिज एसोसिएट आर.सी. पुन्नेट. ठीक है, so these are the scientists who try to find out that if the Mendel's experiment performed on the different plants and animals, what will be the result? They have shown that the factors of the gene were not merely separate elements producing a distinct individual effect, but they could interact with each other to give the completely novel phenotype. Means whenever they perform the experiment on the different plant and animals, in the Mendel's experiment, Mendel का ही experiment जब उन्होंने अलग अलग plants पे अलग अलग animals पे perform करके देखा, they not merely separate the element producing the distinct individual effect. मतलब elements जो थे वो separate नहीं हुए थे या फिर अलग अलग organism पे भी perform करके देखे, but they could interact with each other. मतलब जो elements थे या फिर factor थे कि जिसे हम लोग आज की condition में genes कहते हैं, these genes they get interact with each other to give the completely novel phenotype. मतलब एक नया concept वो देखे जा रहे थे. For example, although the allele A could be characterized by the phenotype A and allele B by the phenotype B, if an organism having both the alleles A and B at the same time might have shown an entirely new phenotype, that is C. The occurrence of such an interaction means that the phenotype we observe is not present in the genes themselves, but arise from the complicated developmental process. So from this condition, we can conclude that whenever the cross between the two organisms, they get combined and they produce the new characteristics in the next generation. Thus, the development of any characters or the phenotype is influenced by the two or more than two pairs of alleles, which are located on the different pairs of chromosome interacting in some complex way. So in this way we can say that if there is a development of new character या फिर any character, ठीक है, कोई भी character अगर develop होता है तो वो character develop होता है किसकी वजह से? Due to the interaction in between the two or more than two pairs of alleles. ठीक है, basically we can say that the genes, दो या फिर दो से ज्यादा जीन्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है और उसके वजह से वहां पे एक कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया है. Moreover, the phenotypic expression of a gene may be altered by the influence of other genes. ठीक है, phenotypic expression मतलब external appearance जो है उस organism का वो change हो सकता है influence of gene की वजह से.
This interaction of gene for the development of specific phenotype in an organism is called as a gene interaction. ठीक है, मतलब जो जीन का इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, this type of interaction is called as the gene interaction. In other words, it is the phenomenon of two or more than two genes affecting the expression of each other in the various ways in the development of single character of an organism is also known as a gene interaction. So this is the part all about the gene interaction. Now let's just talk about the types of gene interaction. The gene interaction are of two types. ठीक है, इसके दो मेन टाइप्स होते हैं जीन इंटरेक्शन के, अलेलिक जीन इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन. ठीक है, अलेलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन. अगेन वी शुड टू नो दैट व्हाट इज मीन बाय द अलील्स. अलील्स क्या होते हैं, तभी जाके हमें ये अलेलिक समझ में आएगा यहाँ पे. So what do you mean by this allelic or intragenic gene interaction? There are two words, that is intragenic and intergenic. ठीक है, दो वर्ड मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, एक मिलेगा इंट्राजेनिक और दूसरा मिलेगा आप लोगों को इंटरजेनिक. इंट्रा एंड इंटर. इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंटर मीन्स इन बिटवीन. ठीक है, इंट्रा मतलब यहाँ पे सेम ही ऑर्गेनिज्म या फिर सेम ही जीन रहेंगे, और इंटर मतलब दो डिफरेंट जीन्स यहाँ पे रह सकते हैं. चलिए पढ़ते हैं. There are two types of gene interaction, allelic or intragenic gene interaction, and second one is a non-allelic or the intergenic gene interaction. First one, that is allelic or intragenic gene interaction. When the two or more than two alleles, what is meant by alleles? The alternative forms which are present on a gene. जीन पे प्रेजेंट रहने वाले जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं alleles. When the two or more than two alleles of a gene interact to produce specific phenotype, then it is called as allelic or intragenic gene interaction. ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा अलील्स अगर इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और अगर वो स्पेसिफिक फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, if they produce the specific phenotype, then this condition is called as allelic or intragenic gene interaction. Example of allelic or intragenic gene interaction is incomplete dominance, codominance, and multiple alleles. You should know these examples of the conditions of the allelic or intragenic gene interaction. इसके तीन एग्जाम्पल दिए हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल alleles. Let's just talk about this non-allelic or intergenic gene interaction, where the two or more than two alleles of a different genes. ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रा आता है मतलब सेम रहेगा, उसी जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा, लेकिन अगर इंटर आ रहा है तो इंटर का मतलब होता है, कहीं पे भी अगर आप मीनिंग लगाते हो इंटर का तो होता है इंटर मतलब इन बिटवीन. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के बीच में, और इंटर स्पेसिफिक अगर हम कहते हैं तो वहां पे दो डिफरेंट स्पीसीज आ जाएंगी. ठीक है, इंटर स्पेसिफिक. तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक सॉरी इंटरजेनिक के केस में इन्होंने बताया वेयर द टू और मोर देन टू एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स. ठीक है, दो अलग अलग जीन्स के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम interact to produce a specific phenotype, then such an interaction is known as a non-allelic or intergenic gene interaction. ठीक है, ऐसे टाइप के इंटरेक्शन को नॉन अलेलिक या फिर इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, आप लोगों ने दो वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, इंट्रा एंड इंटर. ठीक है, इंट्रा अगर कहा जाता है तो वहां पे आप लोगों ने ध्यान में रखना है दैट द टू और मोर देन टू जीन्स, सेम जीन्स, ठीक है, सेम जीन्स इंटरैक्ट. ठीक है, interact with each other is called as intergenic gene interaction. और intergenic gene interaction के केस में क्या होगा, the two or more than two alleles of the different genes. ठीक है, different genes which are present on the same or the different chromosome. So you can see here that when the intragenic gene interaction जो होता है इसके केस में क्या होता है कि अगर सेम जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वहां पे तो उसे हम लोग इंट्राजेनिक या फिर एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहेंगे. और डिफरेंट जीन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है
तो उसे हम लोग नॉन अलेलिक या फिर इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन कहेंगे। अलेलिक या फिर इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। नॉन अलेलिक या फिर इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के एग्जांपल है एपिस्टासिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, पॉलीजीन्स एंड प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है नॉन एलेलिक और द intergenic gene interaction. Now let's just talk about this allelic gene interaction. First example, that is the incomplete dominance. Incomplete dominance having the ratio 1:2 to 2:1. Keep in mind that it is the part of deviation from Mendelian principle. What is meant by the deviation? That after the rediscovery of Mendel's law, rediscovery was done by the three group of scientists, that is Hugo de Rice, Forens, and Shermack. These three scientists, they go for the rediscovery of Mendel's law and they use the post-Mendelian genetics, and it is divided into the part that is gene interaction. Allelic gene interaction having the example incomplete dominance. Let's just talk about this incomplete dominance. Mendel was very much fortunate and lucky while formulating the laws of heredity. We know that Mendel was very strict and a methodological person who go each and every step very carefully, statistically, and stepwise procedure, right? So Mendel was very much fortunate and lucky. बहुत lucky person थे कि उन्हें result मिलते गए formulating the laws of heredity. Since he had selected the 7 characters for his experimental process, उन्होंने 7 characters select किए थे, ये सब लोगों को पता है. All 7 characters had a contrasting traits. Contrasting means opposite and present in a 2 alternative forms. सभी के सभी कैरेक्टर जो थे वो कॉन्ट्रास्टिंग थे, मतलब अपोजिट थे. टॉल के अपोजिट शॉर्ट मतलब ड्वार्फ. और वो 7 जो कैरेक्टर थे वो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स में इन्होंने डिवाइड किए थे. एक था डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा रेसेसिव कैरेक्टर. The F1 hybrid therefore result in only one of the 2 alternative phenotypes of the parents always dominate one, while the F2 generation segregated both in the dominant and the recessive in the 3:1 phenotypic ratio. तो जब भी यहाँ पे क्रॉसिंग की जाती थी किसी 2 पेरेंट में, ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या होता था कि एक डोमिनेट रहता था और दूसरा रेसेसिव रहता था. ठीक है, और जब भी F2 जनरेशन निकाली जाती थी तो दोनों के कैरेक्टर जो रहते थे वो सेग्रीगेट या फिर सेपरेट हो जाते थे. ठीक है, और वहां का रेशियो रहता था 3:1. In this case, the phenotype expressed in F1 is completely dominant over the hidden phenotype, that is recessive. Therefore, there is a complete dominance of the character over the recessive trait. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे और एक स्टेप आगे बढ़ाई है. ठीक है, जैसे कि हमें इतना तो पता था कि whenever the cross between the two pure parents, they produce the F1 generation. In this F1 generation, one of the character is dominant and another one is recessive. ठीक है, यहाँ तक के पता था. लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है और उसके आगे क्या होता है ये नहीं पता था. F2 जनरेशन में क्या होता है कि फिर से वहां पे क्रॉसिंग होती है हाइब्रिड में और वहां पे कैरेक्टर सेग्रीगेट या फिर सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, सेग्रीगेट होने के बाद भी इन्होंने बताया कि जो F1 जनरेशन बनती है इट इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द हिडन फिनोटाइप. ठीक है, जो हिडन फिनोटाइप मतलब जो रेसेसिव ऑर्गेनिज्म या फिर रेसेसिव कैरेक्टर होता है उस पर वो पूरी तरह डोमिनेंट होता है. Therefore, it is a complete dominance. ये केस बताया उन लोगों ने, complete dominance of character over the recessive trait. This is, however, always not true in the all kinds of trait interaction in all the organisms. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि this is, however, always not true. ठीक है, ये चीजें हमेशा वहाँ पे पॉसिबल ही होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया. Always not true in the all kinds of trait interaction in all organisms. सभी organism में इसी पैटर्न से होगा उसके कोई चांसेस नहीं है. There are many instances where some characters or alleles of the same location are not completely dominant over the recessive or not recessive. ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि सभी के सभी जगह पे आप लोगों को वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर, कंप्लीटली डोमिनेंट कैरेक्टर या फिर रेसेसिव कैरेक्टर मिलेंगे ही, उसके कोई चांसेस नहीं रहते. इन सच केसेस बोथ द अलील्स, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, बोथ द अलील्स दैट इज द डोमिनेंट एंड रेसेसिव ऑफ द ट्रेट
are contributing their expression so that it produces an intermediate form or the blending of the two contrasting character. Now this word is very important. You should have to focus on this point that इसके आगे मतलब यहाँ तक के तो बताया है साइंटिस्ट ने कि जब भी क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग होते समय एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है. कभी कभी ये कंडीशन एक्सप्रेस नहीं हो पाती कि डोमिनेंट रहेगा ही या फिर रेसेसिव रहेगा ही, उसकी कोई चांसेस नहीं होते. लेकिन ऐसे समय में क्या होते हैं कि दैट इन सच केसेस बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर पार्शियली. ठीक है, पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म और ब्लेंडिंग फॉर्म. ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म या फिर उसे हम लोग कहेंगे ब्लेंडिंग फॉर्म. इंटरमीडिएट मतलब मिडिल स्टेज. ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब मिडिल. और ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग. हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग कहेंगे कि जो मेंडल ने नहीं बताया था कि वहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं कैरेक्टर, लेकिन रीडिस्कवरी होने के बाद मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया किसी दूसरे प्लांट पे और वहाँ पे बताया गया कि अगर कभी कभी डोमिनेंट या फिर रेसेसिव कैरेक्टर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाती तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो ब्लेंडिंग का मैं आप लोगों को एग्जांपल पूछता हूँ कि ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग बताए. जैसे कि अगर आप लोगों ने रेड और व्हाइट कलर मिक्स कर दिया तो आप लोगों को कौन सा कलर मिलता है बताइए, आंसर भेजिए चैट बॉक्स में. यू कैन सेंड द मैसेजेस इन द चैट बॉक्स ऑफ जूम ऐप. जूम ऐप के चैट बॉक्स में पर्सनली मैसेज मत कीजिएगा. So you can send the messages if we mix the red and white color. Painting करते होंगे बहुत से लोग. So there is a responses from the Payal Ninave, Swati Sapare, Samiksha Bajbi, and Pooja Bambure. These candidates give the response, and I think Saloni Thakur and Galaxy A31 Ruchi Gadwal. Present, sir. It is not the question for presenting, Ms. Ruchi Gadwal. It is a question from our topic. I think you are not concentrating on the topic. Your mind is roaming here and there. Harshal, then Khushbu, Arpita Das, and Galaxy A31. That is Ruchi Gadwal, I think. She says, sorry, sir. So focus on the topic. It's very important. And it is a concept-based topic. It will be help you in a future for your further processing and further academic and education life. Anyways, so it's your personal problem that you have to focus or not. And now it's my duty to explain each and every point here properly. That we are discussing here the part of incomplete dominance, which is one of the example of the allelic gene interaction. And all of you are given correct answer, and thank you for the response. Your answer is the pink color, right? Obviously, whenever we mix the red and white color, we get the pink color. एंड इट इज इंटरमीडिएट कंडीशन. मतलब अगर आप लोग रेड कलर से व्हाइट कलर की तरफ जाते हो, ठीक है, या फिर अगर व्हाइट कलर रख दिया है और आगे रेड कलर रखा है तो व्हाइट कलर से रेड कलर की तरफ जाते हो तो ऐसी एक स्टेज आएंगी सेंटर में, बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन आएंगी कि जहाँ पे आपको कुछ पार्ट रेड कलर का मिलेगा और कुछ पार्ट व्हाइट कलर का मिलेगा. That is 50, some part, not 50%, some part from white color and some part from red color. That is a expression, partially expression from both the parents. ठीक है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से पार्शियल एक्सप्रेशन होगा और वहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएंगी. ब्लेंडिंग का मतलब होता है यहाँ पे मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, and mixing of character it produces these incomplete dominance. So as a result of such a process, F1 hybrid shows the no characters of its parent, instead shows the mixture of them. ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब डोमिनेंट भी एक्सप्रेस नहीं हो पाता और रेसेसिव भी एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ऐसे केसेस में सम पार्ट फ्रॉम डोमिनेंट एंड सम पार्ट फ्रॉम रेसेसिव, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ देम. Such expression of a trait of two pure parents in the form of mixed condition in the F1 generation is a good example of the incomplete dominance or the partial dominance. देखिए यहाँ पे नाम दिया है उन्होंने, they use one word that is a partial, that is incomplete dominance or the partial dominance. Why they called it as a partial dominance? The partial dominance, it is a part of some part from one parent and some part from another parent. In incomplete dominance was first reported in the Mirabilis Jalapa
It is a scientific name of the 4 o'clock plant. ये 4 o'clock plant का scientific name है Mirabilis stellata. It is a best example of incomplete dominance which was given by the Corens in 1903. Also in the snapdragon, another example of incomplete dominance, that is a snapdragon, which having the scientific name Antirrhinum majus, and in the animal, that is the Andalusian fowl. Okay, fowl as like the hen. Okay. So this is the example of the incomplete dominance. Example of incomplete dominance in the Mirabilis stellata. Let's just talk about this. ये बहुत सिंपल है. अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जांपल कुछ भी नहीं है, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो. In the monohybrid cross between the pure red flower plant and another plant with the pure white flower, that is pure red के लिए capital R, white के लिए small r, result in the production of F1 hybrid with the pink flower. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेंडल्स लॉ लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे कलर कौन सा आना चाहिए F1 जनरेशन का, वहाँ पे कलर आना चाहिए रेड. लेकिन रेड की जगह पे कौन सा कलर आ रहा है वहाँ पे, पिंक कलर, पिंक फ्लावर्स, दैट इज अ कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर. मतलब यहाँ पे मेंडल का लॉ जो है वो इनकम्प्लीट रह चुका है. ठीक है, पहला लॉ जो है मेंडल का वो इनकम्प्लीट रह चुका है. मेंडल का पहला लॉ क्या कहता है कि जब भी दो पेरेंट में क्रॉसिंग होती है तो उसकी F1 हाइब्रिड जो मिलते हैं उसमें एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है. लेकिन ये जो लॉ है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है मिराबिलिस stellata का, यहाँ पे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस इनकम्प्लीट रहता है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. The F1 hybrid was allowed to self-pollinated in the F2 generation, produce the red, pink, and white flowers plant in the ratio of in the ratio of 1:2:1. This ratio is not accordance with the typical Mendelian monohybrid ratio. ठीक है, ये रेशियो जो होता है वो जो एकदम टिपिकल मेंडल का जो लॉ होता है उसके हिसाब से मैच नहीं होता है, क्योंकि मेंडल का जो टिपिकल लॉ है वहाँ पे 3:1 रेशियो आता है और यहाँ पे 1:2:1, मतलब रिजल्ट इज स्लाइटली डेविएटेड. Thus, there is a deviation from Mendelian monohybrid ratio. Upon the genetic analysis, it was known that dominant allele produces the red flower in homozygous dominant state, while the recessive allele are produce white flowers in the homozygous recessive condition. However, when alleles and allele present on the heterozygous condition produces a pink flower in the F1 generation, the R alleles of the pink flowers fails to show the dominant behavior over the alternative alleles. Therefore, F1 produces the pink flowers is an intermediate character instead of red and white flower. तो जो पिंक कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है, मैंने आपको बताया कि वो इंटरमीडिएट कंडीशन होती है. द पिंक flowers, the pink flowers are produced, it is the intermediate condition. ठीक है, ये intermediate condition होती है. वैसे तो मेंडल के लॉ के हिसाब से अगर रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पे F1 हाइब्रिड जो मिलेगा इट शुड बी रेड. ठीक है, डोमिनेंट मिलना चाहिए वहाँ पे, लेकिन वैसा नहीं होता है in case of the incomplete dominance. It is one of the best example of the allelic gene interaction. It is incomplete dominance. So this is a crossing, red flower, white flower. It produces F1 generation, pink flower. सेल्फिंग करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से चेकर बोर्ड मिलेगा वहाँ पे पुनेट स्क्वायर. Phenotypic ratio 1:2:1. Genotypic ratio 1:2:1. Next one, that is non-allelic gene interaction. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ही कंडीशन एक्सप्लेन की है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. साथ ही में वहाँ पे एक co-dominance होता है. In case of co-dominance, that there is a expression of character from both the parents equally expression होता है co-dominance के केस में, और multiple alleles के केस में single gene control the 2 or more than 2 characters is called as the multiple alleles. Anyways, now let's just talk about this non-allelic gene interaction. ठीक है, non-allelic gene interaction के बारे में देखते हैं. तो non-allelic gene interaction की definition तो पहले ही बता चुके हैं कि whenever the 2 or more than 2 alleles which are present on the different when the interaction between the 2 or more than 2 different genes which are present on the same or the different chromosome, it is a case of the non-allelic or the intergenic gene interaction. The example of intergenic or non-allelic gene interaction is complementary genes which having the ratio 9:7.
And having the example is sweet pea, that is Althyrus odoratus. जिन interaction के पार्ट हमें पढ़ना है, that is the part of linkage. So I think just a minute.